Ok. Aujourd'hui, on va commencer par la unité 1, Edito Veda. Unité 1 est à mon avis. À mon avis, c'est-à-dire? What is à mon avis? My suggestions. Yes, en français, s'il vous plaît. À mon avis, on utilise cette expression pour exprimer son opinion, pour donner une opinion à propos de quelque chose. Donc, ok. Premièrement, on va commencer par compréhension écrite. Lisez le texte, Jaskaran. La France, c'est quoi? J'associe souvent l'image de la France à celle du tableau La liberté guidant le peuple du jeune de la Croix. À mes yeux, la France est en effet synonyme de démocratie, de république, démocratie. Oui. Oui, de république, du respect des valeurs, des droits de l'homme et de l'intégration des personnes de cultures diverses au sein de la société. La France est, selon moi, un pays riche d'histoire, de culture, comme en témoignant régulièrement les musées et les événements culturels. Si je devais le comparer à l'Italie, je dirais qu'en France, le secteur public fonctionne mieux. Le réseau de transport, la santé publique, la sécurité sociale sont de vrais services pour les citoyens. Par contre, en Italie, je trouve que les jeunes savent mieux profiter de la vie. J'estime également que les relations interpersonnelles sont plus importantes. Sont plus importantes et les gens sont plus chaleureux en Italie, en France et en particulier dans les grands. Attendez. Et en particulier. Et en particulier dans les grandes villes, il y a règne un fort individualisme, tandis qu'en Italie, la famille a un poids beaucoup plus important et les jeunes quittent beaucoup plus tard et le toit familial. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris le texte?
Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est qui la personne qui dit ça? C'est qui? Avocat. La personne est Nadia Fagé, Oui. italo-tunisienne. C'est une avocate. Donc, c'est une opinion personnelle à propos de France qui est donnée par Nadia Fagé. OK? Alors, est-ce que vous avez compris le texte? आपको टेक्स्ट समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Can you summarize it little bit? And like she has explained about the culture and all the aspects of life. Mm-hmm. Mm-hmm. And comparison between the life in Italy and France. Yes. इसमें इसने क्या किया है? इसमें अपना ओपिनियन दिया है फ्रांस के बारे में। ये इटली से आई है और ये फ्रांस में रह रही है, तो इसने फ्रांस के बारे में अपना ओपिनियन इसमें दिया हुआ है। तो इसने अपना ओपिनियन देने के लिए कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज किए हैं? ये देखो, आमेजिए, selon moi, je dirais, j'estime. Donc, ce sont les expressions qu'on utilise pour exprimer notre opinion à propos de quelque chose. d'accord? इस टेक्स्ट में कोई ऐसा वर्ड या फ्राज जो आपको समझ में ना आया हो? ओके, हमें लास्ट पैराग्राफ में Mhm. les gens sont plus chaleureux. Chaleureux, you don't know what is chaleureux? Yes, ma'am. Essayez une fois, try. Essayez de comprendre globalement. Les gens sont plus chaleureux en Italie. Chaleureux, c'est-à-dire very welcoming, very warm. Okay. Yes. Chaleureux mean welcoming, warm welcome. Okay, next. Next person is Pamela et Jeff Club, États-Unis, retraité Paris. Donc, c'est l'opinion de Pamela et Jeff Club. Ok, d'accord, maintenant je vais lire. La France, pour nous, c'est un ensemble merveilleux et amusant de contradictions. Les Français sont ouvertement gays et festifs aux terrasses des cafés, mais on les retrouve régulièrement en colère et mécontents dans des manifestations sans fin. La France est un pays dont les habitants respirent la santé et pourtant ils fument, boivent et mangent du foie gras, du confit de canard et des riz de veau. Même la langue est un paradoxe. Le lait est un nom masculin. Salut signifie à la fois bonjour et au revoir. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit? Jusque là, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. कुछ समझ में Okay. एक बार Try आप to summarize it. Try to summarize it little bit.
Ma'am, like for them, they find France as like they find France amazing and amusing with some. There are some things that they don't like. Next. इसमें ये बताया इसने कि जो फ्रांसेस हैं, ले फ्रांसे, वो ओपन माइंडेड हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो रेगुलरली au colère et mécontent, मींस गुस्से में रहते हैं और अनहैप्पी रहते हैं, और वो कंटिन्यू ग्रैब करते रहते हैं. donde manifestation sans fin, मींस कि वो ग्रैब, पता है ना आपको क्या होती है मैनिफेस्टासियों? स्ट्राइक. वो रेगुलरली स्ट्राइक करते रहते हैं. तो हर छोटी सी छोटी बात को लेके वो अपना गुस्सा करेंगे और स्ट्राइक करेंगे. तो ला फ्रांस est un pays dont les habitants respirent la santé, मींस कि वो हेल्थ कॉन्शियस है, बट ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं. और mange du foie gras. Vous savez qu'est-ce que c'est foie gras? Just Karan? Don't know. foie gras होता है इनका, वो नॉन वेज में आता है. foie इट्स लिवर, फैटी लिवर. ये किसी चीज का लिवर होता है. तो ये वो बहुत ज्यादा नॉन वेज बहुत ज्यादा खाते हैं, और बट ये हेल्थ कॉन्शियस भी हैं. तो इसने इसमें लैंग्वेज के बारे में भी बोला है. मैम ला लॉन्ग एता पैराडॉक्स, ले एता नो मैस्कुलिन, मींस कि जो ले है, ले होता है ना मिल्क, हाँ, वो उसके लिए उसने बोला है कि वो मैस्कुलिन है. और जो साल्यू है वो उसको हम बॉन्जूर के लिए भी यूज करते हैं और औरवुआर के लिए भी यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लैंग्वेज में भी पैराडॉक्स है. अदरवाइज फ्रांस का एक्सपीरियंस जो है वो मार्वियस भी है और एम्यूजो कॉन्ट्राडिक्सियो भी है, मींस कि दोनों ही हैं. ठीक है. इसमें हम सारे जितने भी टेक्स्ट दिए हैं इसमें हम यही रीड करेंगे कि किस किस पर्सन ने अपना क्या क्या ओपिनियन दिया है. नेक्स्ट लीजिए. मार्की ए शीन डेवलपमेंट द प्रोड्यूट the maroquinerie château. Lisez. Avant de venir en France, je pensais que c'était un pays très romantique et en fait, je me suis aperçu que c'était vrai. तो इसमें इसने क्या बोला है? Before coming to France, she thought that the country is very romantic, and in fact, कि उसने realize किया कि सच में ऐसा ही है. Yes. And next. Ok, je vais lire pour vous un instant. Oui. C'est un témoignage de Ekaterina Keruzzi, doctorante enseignante en philosophie Paris. La France, pour moi, est très bel livre et très limité en même temps. Je m'explique. La France est ouverte aux étrangers. Ici, ils ont les mêmes droits que les Français. Si tu maîtrises la langue, tu te feras beaucoup d'amis parmi les Français. De plus, ceux-ci sont ouverts à beaucoup de choses qui sont impossibles en Russie. L'exemple le plus récent est la loi sur le mariage pour tous. D'autre côté, la France est limitée, comme je l'ai dit. À mon avis, le fonctionnement de la bureaucratie française est une aberration. Pour avoir la sécurité sociale, par exemple, il faut présenter un dossier d'à peu près 50 pages. Il n'est pas évident que tu reçoives la carte de sécurité sociale au mois d'un. Et cela n'est pas seulement vrai pour les étrangers. Les Français sont dans la même situation. D'autre part, en France, tu dois être toujours très précis. Sinon, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Par exemple, si tu achètes un billet à la gare et tu dis que tu veux prendre un train
que par a 19 archont, lo wanda peut répondre qu'il n'y a pas de train à 19 archont. Et après, il s'avère que s'il n'y a pas de train à 19 archont, on a un à 19 archont. Vous voyez, il faut être précis en France. इसमें भी इसने अपना ओपिनियन दिया हुआ है. कौन सा ओपिनियन दिया हुआ है? ओपिनियन नुआंसे, मींस कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों ओपिनियन दिए हुए हैं. ओके, तो इसमें आपको समझ में आ गया टेक्स्ट? Yes, ma'am, almost. Can you summarize it? Like according to her, she finds France very free, and at times it is like limited. It is very open for the strangers, and have the same right for the Francais. Means कि stranger और Francis में कोई difference नहीं है, दोनों के लिए same rules हैं. yes. Yes. Next. If you know the French language, you can make a lot of friends over there. French friends. En plus, ceci sont ouverts à beaucoup de choses qui sont impossibles en Russie. Means कि वो बहुत सारी ऐसी मतलब things को लेके open है जो कि रूस में possible नहीं है. L'exemple le plus récent est la loi sur le mariage pour tous. तो यहाँ पे कुछ मैरिज को लेके रूल होगा जो कि वहाँ पे रूस में पॉसिबल नहीं है बट फ्रांस में है. एंड द autre côté another side, फ्रांस क्या है, लिमिटेड भी है. कम जले दी, जैसा कि उसने पहले बोला कि फ्रांस लिमिटेड है. À mon avis, यहाँ पे इसने अपना ओपिनियन दिया हुआ है. À mon avis, le fonctionnement de la bureaucratie française est une aberration. Vous savez c'est quoi? Aberration means Un instant, just kidding. Un instant. Yes, désolé. Continue. Yes, yes, Karan. Hello. What is the meaning of aberration? Okay. Aberration is like something which is not understandable. Like there are a lot of things which do not have their own sense. So it is kind of banal, les choses banal. Like for example, ici elle a dit que pour avoir la sécurité sociale, on doit soumettre un dossier de papier 50 50 पेजेस का हमें एक फाइल सबमिट करनी पड़ेगी और वो भी श्योर नहीं है कि तुम्हें उसका कार्ड जो है वो मिल जाएगा और इसके लिए 1 साल भी लग जाता है. तो ये सिर्फ स्ट्रेंजर्स के लिए ही ऐसा नहीं है बट जो फ्रांसेस हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन है. एंड द d'autre part, इसमें इसने क्या बोला है कि आपको बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ेगा. लाइक जैसे इसने एग्जांपल में बताया है कि अब अगर आप पूछोगे कि 7:30 पे कोई ट्रेन है तो वो बोलेंगे 7:30 पे नहीं है बट हाँ 7:32 पे है.
इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट। Next is ici, elle vient de Chili, elle est ingénieure sur SNES. Avant de venir ici, la France était pour moi le pays généreux qui avait reçu mon oncle exilé à cause de la dictature. C'est aussi un pays où j'ai de la famille. Ma tante est française et pendant de nombreuses années, ma famille a reçu des visiteurs français. Alors, toute ma vie, j'ai eu une relation spéciale avec la France. Je pense qu'ici, la société est très avancée dans certains domaines, mais que certaines personnes à l'opposé ont des idées qui sont un peu d'une autre époque. À mon avis, la différence principale avec le Chili et ou l'Espagne, c'est la difficulté à générer des relations sociales ou la difficulté des personnes à pratiquer des activités avec spontanéité. Je trouve que planifier, c'est bien, mais pour moi, ici, il y a trop de planification. Sinon, j'ai l'impression que les personnes sont plus cultivées. Elles vont au cinéma, au théâtre, aux expositions et connaissent d'autres pays. J'adore ça. Par contre, la langue française ne permet pas de comprendre facilement les gens qui ne parlent pas bien, parce que la prononciation est très importante. Je crois qu'au contraire, l'espagnol le permet. Ça va? Oui. Comprenez-vous le texte? Oui. Ok. Essayez de le sommer. मैम एक था इसमें लाइक Yes. en des idées qui sont un peu d'une autre époque. एपोक का मीनिंग यहाँ पे क्या है? Epoch means कि like कि epoch वैसे होता है पुराना. Autre epoch means belong to past. ओके तो यहाँ पे ये बोल रही है कौन सी लाइन में है ये? Quelle est la ligne? मैम सिक्स लाइन. Je pense qu'ici, la société est très avancée dans certains domaines. Means कि society is very advanced, mean in certain professions or certain domains. May certain person, but some people à l'opposé, on the opposite, ont des idées qui sont un peu d'une autre époque. Have the ideas, उनकी जो mentality है वो बहुत पुरानी है. Even though जो society है वो बहुत advanced है, but there are some people who have very poor mentality, very old ideas. ओके देखो. Yes. Any other word? So इसमें इसने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज किए हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए? Je pense que à mon avis, Yes. sinon j'ai l'impression. Je pense que, à mon avis, À mon avis. je trouve que, j'ai l'impression que. Any other? Okay. Next. Next is Lisez, Jiskaran. En ce qui me concerne, je trouve que la France est un pays très humain. Est un pays. Est un pays très humain. Humain. Par exemple. Continuez.
triomphe de la vie en, en comparaison avec le Japon. L'administration française ne fonctionne pas très bien et évidemment la France, c'est aussi le pays de la mode, du parfum, de la cuisine parallèle. Je trouve que les France sont que les Français sont très attachés à leur culture, art, littérature, cinéma. Ok, ici on dit du parfum. Ok, it is la pronunciation est du parfum, and this one is par ailleurs. On ne prononce pas L, donc c'est par ailleurs. This is R, on ne prononce pas T, R. Ok, so, est-ce que vous avez compris le texte? She finds that the people of France, they consider their work more important than anything else, whereas in Japan, sorry, when she talks about the administration, like when she compares it with Japan, she feels that the functioning is not very good. Yes. And there are many things in this country, like the fashion, perfume, and food. Yes. And she also said that the French people are very attached to their culture, art, literature, and cinema. Okay. Le dernier texte, je vais lire pour vous. Premièrement, je dirais que la France, c'est une conscience politique et des valeurs humaines. Je fais référence à la Déclaration des droits de l'homme, la Révolution française, mai 68. Les Français sont concernés par l'action politique. Ils n'ont pas peur de montrer leur mécontentement, de râler, et pour moi, c'est positif. Les Autrichiens, au moins, ce côté contestataire. C'est mal vu de manifester. Deuxièmement, c'est un savoir-vivre gastronomique. On cherche toujours une saveur, le goût, la perfection, le vin approprié pour accompagner un plat. Je trouve que cette manière de manger, de voir et de discuter aussi est très particulière aux Français. D'après mon expérience, quand on est invité à un repas, on parle tout de suite de tout, y compris de politique. Ça va? Lisez une fois silencieusement et dis-moi s'il y a des mots difficiles, ce que vous n'avez pas compris. Just Karan? Yes, ma'am. I'm just going through it once. In the last line, there is one expression ki, on parle tout de suite de tout. Tout de suite, c'est-à-dire immediately. Okay. Oui. Je
Je suis compris. Ok, alors on va faire les questions maintenant. Lisez la première question. D'où viennent les personnes qui témoignent, Témoigne. témoignent. Mhm. À votre avis, quel est leur point commun? Mhm. Ok. So, qui sont les personnes qui a donné son opinion à propos de France? Les personnes qui témoignent viennent de pays étrangers à la France. Ce sont les étrangers. D'accord? À votre avis, quel est leur point commun? उनमें कॉमन पॉइंट क्या था सब में? Like all ह्यूमन वैल्यूज के लिए सबने पॉइंट रखा था, कल्चर एंड फूड. Ok. Ici, on va répondre. La France, c'est quoi? C'est le titre de le texte. C'est le titre du texte. Donc, toutes les personnes vont répondre la question, la France, c'est quoi? Ils ont donné une opinion à propos de la France. Ils ont donné une expérience qu'ils ont vécu à France. OK? Next question. La question numéro 2. Les avis sont-ils plutôt positifs ou négatifs? Donnez des exemples. अब इसमें इन्होंने पूछा है कि जो ओपिनियन था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी एग्जांपल दो. तो इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. तो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसमें? पॉजिटिव में कि वेलकमिंग है and about the gastronomy, cuisine, culture. Oui. Donc ici, on va dire les avis sont nuancés. Nuancés, c'est-à-dire कि कोई डेफिनेट avis नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों ही है. तो on va dire les avis sont nuancés. तो nuance spelling Nuancés. Les avis sont nuancés. Si इस पे accent आएगा. D'accord. Okay. So इसमें premièrement on va discuter les avis positifs. Nadia, elle a dit un avis positif. Et après cela, c'est qui? Marquis T. Elle a aussi donné, elle a aussi donné un avis positif. Et après cela, Ekaterina K. Katerina nuance. Nuancé. Donc, tous les témoins donnent les avis. Les avis nuancé. Okay. Next question.
Lisez la question numéro 3. Les opinions vont-elles dans la même sens ou sont-elles contradictoires? C'est quoi? Dans la même son ou sont contradictoires? Qu'est-ce que vous avez compris après lire le texte? Just Karan? Yes, ma'am. Like Quelle est the l'opinion? opinions that Continue. ma'am, the question is asking about the like the negative opinions. Like अगर हम इनको कंपेयर करें तो वो उनके जो ओपिनियन है वो एक सेम उनकी सेंस है या उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. लाइक अगर हम फर्स्ट ओपिनियन रीड करें नादिया का एंड सेकंड